Hello students, I am Noman Ahmed, your physics teacher. Welcome to pre-coaching classes. In today's video lecture, we will discuss topic number 4.7, which is center of gravity of unit number 4. This topic is on page number 94 in book. After watching this video, you should know about center of gravity, okay, and what is its role towards the stability of the objects. Then we will find out the center of gravity of symmetrically shaped objects, and then we will find out the center of gravity of irregular shaped objects, and at the end you will be able to tell the difference between center of mass and center of gravity. In review of previous lecture, you should must know about what is clockwise and anti-clockwise moments, okay. In the topic principle of moments, uh, you came to know about moments and what is center of mass, okay. So now coming towards the center of gravity, its simple definition is a point around which the force of the gravity of the body appears to act vertically downward is called center of gravity of the body. So it is actually the average location of the weight of the body. For example, in this figure you can see that there are small weights w1, w2, w3 and so on, okay. These are small weights of the particle. Actually all of matter is composed of small particles, okay. So on each particles there will be acting the force of gravity, which is always in downward direction, okay. So now you know that matter is composed of small particles, and on every particles there will be a force of gravity acting, okay, in downward direction. So the pull of the earth acting on a particle is equal to its weight, okay. So when all of these forces acting on the particles of the body, we add up all of those forces, then there will be a resultant force, okay. And the point where this resultant force acts vertically downward towards the center of the earth will be its center of gravity. All right students. Now how can we look at the center of gravity of symmetrical objects, okay, of or or regular shape objects. So first of all, just remember that the center of gravity of uniform objects is at its midpoint, okay. Its geometric center. For example, in the given figure you can see a rod, okay. For example, the center of gravity of a uniform rod lies at a point where it is balanced, okay, and this balance point is its middle point G, which you can see in the figure clearly. So this middle point will be its center of gravity.
Now there are some more symmetrical objects. How can you identify its center of gravity? Okay, remember that all of these shape are regularly shaped objects. Okay, so in figure A, the center of gravity of a uniform square, or in figure B, which is a rectangular sheet, you can find its center of gravity by uh, a simple process. Okay, first of all, you should draw a line from its diagonals. Okay, and where all the diagonals meet, okay, that point will be its central center of gravity. Okay, for example, you can see that when we draw the diagonals, then these diagonals will meet at the center, and this point will be its center of gravity. Okay, for example, here you can see the diagonals meet at center, so this center, so this point will be a center of gravity. Okay, now in figure B, okay, it is a uniform circular disk, and the center of gravity of uniform circular disk will be its central point. Okay, actually all the lines meet at this central point, so this will be its center of gravity. Similarly, if a sphere is hollow, then its center of gravity will be also lie in center. Now in figure D, the center of gravity of a uniform triangular sheet is the point of intersection of its medians. Okay, point of intersection of its median. Now in figure number F, this is a cylinder. Okay, a cylinder can be hollow or non-hollow, but its center of gravity will lie in its middle point, at its midpoint. Okay, एक्चुअली इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि इसकी टॉप पर भी एक सर्कल आप देख सकते हैं, और इसके बॉटम पर भी आप एक सर्कल देख सकते हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट इज एट इट्स सेंटर. ओके, सो जब आप सर्कल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और उस वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, दैट पॉइंट विल बी इट्स center of gravity. Now, how can we locate the center of gravity of an irregular shaped object? Okay, for that we will use a plumb line. I hope कि आपने plumb line देखा होगा, जहाँ पे अक्सर ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं तो मिस्त्रियों के पास होती है ये plumb line. ठीक है, I hope all of you have seen this. So a simple method to find out the center of gravity of a body is by the use of plumb line. A plumb line actually consists of a metal bob supported by a string. एक तार होती है जिसके साथ एक metal bob को अटैच किया होता है. Alright students, when the bob is suspended freely, it rests along vertical direction as its weight acting vertically downward. Okay, आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इन द गिवन फिगर एक इरेगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कार्डबोर्ड है, वो एक इरेगुलर शेप का है. ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हर एक इसके एंड पे
ए बी सी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो पॉइंट आउट भी किया हुआ है फिगर में कि आपने यहाँ पे सुराख करना है, ठीक है, उसमें से एक कील को आपने अटैच करना है और हर एक पॉइंट पे आपने प्लम लाइन को सस्पेंड कर देना है। सो प्लम लाइन की जो पोजीशन होगी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो फिर आपने फॉर एग्जांपल पॉइंट ए में लोकेट कर दिया है प्लम लाइन की पोजीशन, आपने पेंसिल में ड्रॉ करना है, फिर आपने रोटेट करना है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी में, सेम प्रोसेस करना है पॉइंट सी में, सेम प्रोसेस करना है। जहाँ पे ये तमाम लाइंस एक दूसरे पे मिल जाएं वो पॉइंट एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। ओके, so in this case the center of gravity of the bomb is exactly below its point of suspension. Now we will discuss some difference between center of gravity and center of mass. Okay, center of mass is actually that point at which all the mass of a body is concentrated. Okay, it is independent of a force field, for example gravitational field. मास बेसिकली जस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई भी फोर्स फील्ड हो उस पर डिपेंड नहीं करता मास, ठीक है। सो सिंपली सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहाँ पे सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। वाइल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट सिंगल पॉइंट on an object where all of its weight is assumed to be located. Okay, so center of gravity असल में ग्रेविटी का फोर्स जहाँ पे लग रहा होता है वो वाला जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है। So center of gravity is about the force of weight and center of mass is just the concentration of its mass. Okay, and remember that a body balances because no net torque acts on a body at center of gravity. Like in the given figure एक टॉय है और वो बैलेंस की हुई है, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो बैलेंस है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा, टार्क उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर दिस। The center of mass and center of gravity are in same position if the gravitational field in which the objects exist stays uniform. और ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे भी दोनों लाई कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो और बॉडी की शेप भी यूनिफॉर्म हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे पेपर पे में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे एक बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं, वो रोटेट होगी कि नहीं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक दूसरा लास्ट स्लाइड के मुतालिक एक क्वेश्चन आ सकता है कि इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर आप पे देना है कि बाय यूजिंग प्लम लाइन।
So this was your today's topic. It was very simple. If you have any question, you can contact me on WhatsApp. Okay, you can